हेलो, अरे डिराइव कर दिए थे। v Yes, इज sir. इक्वल माइनस जी एम बाई आर एंड u इज माइनस जी m1 m2 by r. Potential energy is negative, already I told that. Clear? The potential energy of a single mass cannot be calculated, that is meaningless. Potential energy what of the bodies of a system can be calculated, more than two bodies. तो यहीं पे लिखेंगे, लिखो gravitational potential due to three particle system. Write down gravitational potential, gravitational potential, gravitational potential due to three particle system. Three particle system. Gravitational potential due to three particle system. If you are taking three particles, how the gravitational potential will be there? You see, these are the three particles present here. This is what m1, this is what m2, and this is what m3. I have to find out the gravitational potential energy. Gravitational potential energy, yeah? This is what the energy. Gravitational potential energy, write down here. Write down here, gravitational potential energy, yeah? Energy, write down. Gravitational potential energy of three particle system we have to find out. How? Let's see this. So first of all, I have to find out gravitational potential between what? Gravitational potential between these two, m1 and m2. Then I have to find out gravitational potential energy between m2 and m3. Then I have to find out gravitational potential between m1 and m3. Understand this? एक एक करके निकालेंगे. पहले gravitational potential energy between m1 and m2. For that the distance is r12. The gravitational potential energy between m2 and m3. For that the distance is r23, and the gravitational potential energy between m1 and m3. For that the distance is r13. Is it clear? अरे समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. समझ में आ रहा है सभी को? अरे समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम आई हैव टू फाइंड आउट. Gravitational potential energy of three particle system I have to सर find out. Gravitational potential energy, सर सर yes. वो R3 Okay, होगा okay. और ऐसे R13 होगा सर. now ये से ही शुरू हुआ. Gravitational potential energy due to three particle system I have to find out. Gravitational potential energy between due to three particle system. Gravitational potential between m1 and m2 you have to calculate. Gravitational potential energy between m1 and m3 you have to calculate. Gravitational potential energy between m1 and m3 you have to calculate. Understand this? Individual gravitational potential energy you have to calculate. Understand this? लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो. तो यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू फाइंड आउट. हाउ टू फाइंड आउट द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? लेट्स सी. राइट डाउन. डायग्राम ड्रॉ कर दिए सभी? हेलो. अरे फिजिक्स याद है? Sir, 1 minute. क्या बोलो? हेलो. ड्रॉ द डायग्राम. देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of three particle system is given by, देखो, gravitational potential energy of three particle system is given by, gravitational potential energy of three particle system is given by u is equal, first gravitational potential between 1 and 2 you have to calculate, that is u1 and 2, plus second gravitational potential energy between 2 and 3, that is u2 and 3, plus third gravitational potential energy between 1 and 3, u1 and 3. All possible values you have to calculate. This is minus z m1 m2 by distance is r12, minus z, this is m2 m3 by r, what is that, 2 3, minus z, what is that, m1 m3 divided by r13. This is what the total gravitational potential energy of the system. Is it clear? Gravitational potential energy of the system.
दिस इज व्हाट द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 3 पार्टिकल्स होगा तो ऐसे निकालोगे, अगर 4 पार्टिकल्स होगा तो हर एक बीच में निकालोगे। लिख दिया यहीं तक? कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If it is 4 particle system, then what will happen? Let's see. If it is 4 particle system, write down gravitational potential energy for 4 particle थोड़ा system. What is that? प्रीवियस पेज थोड़ा Let's see दिखाएंगे। this. Gravitational potential energy for 4 particle system. How much you're getting? Let's see this. Gravitational सर potential energy between 4 particle system. How much you're getting? Write down. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 4 पार्टिकल सिस्टम। देखो, अगर 4 पार्टिकल ऐसे होंगे एक क्वाड्रिलेटरल में, तो हाउ टू फाइंड आउट? दिस इज व्हाट m1, दिस इज व्हाट m2, this is what m3, this is what m4. First of all, I have to find out gravitational potential energy between 1 and 2, फिर 2 and 3, फिर 3 and 4, फिर 1 and 4, फिर 2 and 4, फिर 1 and 3। कितना मिलेगा? All possible values you have to take. All possible values of gravitational force. Okay, all possible values you have to find out. All possible values you have to find out. जैसे इसमें all possible value निकाले थे between 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3। अरे हो गया देवी प्रसाद? हेलो, अरे कंप्लीटेड? यस सर, ये यस पेज सर, कंप्लीटेड? सर हो गया। Okay. यस सर। Next, for 4 particle system, all these possible values you have to take between 1 and 2, between 2 and 3, between 3 and 4, between 2 and 4 and between 1 and 3। for 5 particle system देखो कैसे होगा। अगर 5 पार्टिकल हो गया तो बहुत और कॉम्प्लिकेटेड है। between 1 and 2, 2 3, 3 4, 4 1, then 4 5, understand this, then this is 3 5, then 2 5, then 3 5, अंडरस्टैंड दिस, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। एंड ये दोनों के बीच में निकलेगा, फिर ये दोनों के बीच में निकलेगा। अरे समझ में है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट? ईच एंड एवरी पार्टिकल रिलेशन हैव टू फाइंड आउट देयर। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड दिस, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। इज इट क्लियर? अरे समझ में है? तो एक क्वेश्चन लिखो, राइट ऑन ए क्वेश्चन, write down a हाँ question. सर, Question वो is somehow like पोटेंशियल this. कैसे लिखो, निकाले सर? find out सर the सर gravitational potential हेलो energy. Find out the gravitational potential energy and gravitational potential and gravitational potential gravitational potential in the following figure. This figure is a square of side L, and gravitational potential energy and gravitational potential what? At the center O. Gravitational potential at O. You have to calculate. Gravitational potential energy of the system and gravitational potential at O. You have to calculate. निकालो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। First let's see gravitational potential energy. Gravitational potential energy is how much? अरे कितना आएगा? -g m1 m2, ये m1 है, ये m2 है, m1 m2 divided by r means l, सर -g m2 m3, m2 also m, m3 also m, l -g m3, what is that? m4 by l -g m1 m4 by l। ये 4 हो गया ना? अरे चारों का निकाल रहा हूं मैं, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस इसका एनर्जी प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, फिर ये दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में, तो क्या आएगा? -g m बाय ये डिस्टेंस कितना आएगा? √12 बाय √12 -g m बाय √12। यस, अंडरस्टैंड दिस? यस यस, सही है। देखो
तो कितना आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3 4 -4 G m² / L, ये है -2 G m² / √12. This is what the gravitational potential energy. Understand this? -4 Gm² / L -2 Gm² √12 लिखा. Now gravitational potential at O. How much you're getting? Gravitational potential at O. Tell me. Gravitational potential at O. बोलो कितना आएगा? अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओ. पोटेंशियल तो सिस्टम का नहीं है, एक का भी निकालेगा. निकाल सकते हो. एक का निकालो, इंटू 4 कर लो. अरे एक का निकालो, ये एक का निकालो, यहीं पे एक का निकालो एंड सब डिस्टेंस सेम है, इंटू 4 करो. तो लेट्स सी दिस. लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल -Gm/L. L मीन्स व्हाट? अरे ये कितना आएगा? पूरा √2L है. ये तो ये इतना, ये डिस्टेंस कितना आएगा? है √12/2. √12/2. तो लिखो दिस इज व्हाट? √2L/2. और दिस इज व्हाट? इंटू 4, बिकॉज 4 पार्टिकल्स आर देयर. तो 4 into 2 divided by √2L Gm minus Gm. तो दिस इज व्हाट? -8. और ऐसे भी हो सकता है. ये कैसे होगा? कैलकुलेट करो कितना आएगा. दिस इज व्हाट? 4/-4/2 Gm. और दिस इज व्हाट? -2 √2 Gm. दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओ. सर फॉर्मूला समझ में वगैरह आया? याद कर सकते हैं सर. सर सभी को समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया यस बोलो. सर. अरे सभी को समझ में आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. हेलो. अरे समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप, एस्केप करना है. एस्केप वेलोसिटी. अरे कैसे एस्केप किया जाए? है? अरे घर से कैसे एस्केप करोगे? पिताजी घर में, थोड़ा दोस्त आ गए तो घर से एस्केप करना है. कैसे करना है? है? अरे क्या है? थोड़ा थोड़ा आगे जाना है. अगर पिताजी कुछ नहीं बोले तो पूरा निकल जाना है. अरे घर से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है टुवर्ड्स गेट. पिताजी अगर कुछ नहीं बोले तो आराम से चले जाना है गेट, गेट से बाहर. अरे ऐसे एस्केप हो रहे हो ना. अगर पिताजी डांट लिए उनका, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस के अंदर तुम रहते हो गेट के अंदर. अगर इन्फ्लुएंस में अगर डांटे तो निकल आए फिर घर घर को. अगर डांट नहीं पड़ा तो इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, गेट से बाहर चला गया, मतलब दोस्त के साथ चले जाओगे घूमने के लिए. है कि नहीं? So that is what escape velocity. Here also the same concept you can apply here. In case what of Earth, let's see that what we are living on Earth. Understand this? And you're just projecting a stone vertically upward. When you're projecting the stone vertically upward, the stone moves vertically upward and returns back. और थोड़ा ज़्यादा स्पीड में फेंका तो और ज़्यादा ऊपर गया फिर नीचे आ गया. और ज़्यादा स्पीड में फेंका तो और थोड़ा ऊपर गया और नीचे आ गया. और ज़्यादा ऊपर फेंका तो ऊपर चला गया फिर नीचे आया. और थोड़ा सा ज़्यादा अगर फेंका तो ऊपर जा रहा है सीधा और वापस नहीं आने वाला है. क्यों? बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज व्हाट? Around this region only. This is the influence of earth. So any body moves across this influence, clear, it will never returns to earth. So the velocity by which you are projecting, v, you are projecting the body what? In vertically upward, so that it never returns to earth. This minimum velocity you are projecting is known as escape velocity. And minimum velocity by which you are projecting so that the body never returns to earth is known as escape velocity. जितना एनर्जी सब डाल दिया उसी के ऊपर. जितना भी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा था उसी के ऊपर दे दिया. तो सभी पोटेंशियल एनर्जी को गेन करके ये क्या वेलोसिटी मिला, इसको एस्केप हो गया, हाथ से बाहर चला गया. अंडरस्टैंड दिस? लिखो एस्केप वेलोसिटी क्या है. दिस इज द
This is the minimum velocity by which a body is projected. This is the minimum velocity by which a body is projected so that it never returns to earth, so that it never returns to earth is known as so that it never returns to एक earth बार थोड़ा is known repeat कर as सकते हैं? escape velocity. It never returns to earth is known as escape velocity. So that it never returns to earth is known as escape velocity. Is that clear? Escape velocity. Understand this? Okay. This is the minimum velocity by which a body is projecting. This is the minimum velocity by which a body is projecting so that so that it may not return to earth, so that it may not return to earth is known as escape velocity. Escape velocity. तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट डालेंगे यहीं पे. व्हाट इज दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट? लुक हियर. Suppose a body is on the surface of earth. M is mass of earth and R is the radius of earth, and a body is on this surface, small m. Now I am projecting the body with minimum velocity v, so that it will escape out from the earth's surface. It will never return to earth. Is that clear or not? अरे अच्छी तरह समझो, ये important है. What is that? I am just taking a body on the surface of earth. M is the mass of the body, and I am just projecting with velocity v. V is the minimum velocity by which you are projecting the body, so that it will escape out from earth's atmosphere. It will never return back. And I have to calculate what is v. How to calculate v? When the body is on the surface of earth, the entire gravitational potential energy is converted into kinetic energy of the body. When the body is on the surface of earth, the entire gravitational potential energy will be converted into what? Kinetic energy of the body, because it never returns to earth, means it continuously move with velocity. Understand this or not? लिखो, diagram draw करो. Draw the diagram and write down. Draw the diagram and write down. हो गया? Yes, sir. Okay, लिखो. Let a body of mass m, small m, let a body of mass small m is on the surface of earth, is on the surface of earth, having mass capital M and radius r, capital R. Having mass capital M and radius capital R. Radius capital R. The gravitational potential energy, write down, the gravitational potential energy between M and capital M, small m and capital M, is what? U is equal minus z mm by what? Capital R. ये distance between m and m is what? Capital R, because इसका जो height का distance है वो negligible है. So I'm writing minus z mm by R. Clear? Understand this? Taking its magnitude. सर Right? हाँ बोलो बोलो बोलो. सर वो स्टेटमेंट को और एक बार रिपीट कीजिए. Right on. The gravitational potential energy between capital M and small m, the gravitational potential energy between capital M and small m is given by U is equal minus G capital M small m by R. लिखा?
U is equal minus Z mm by R. Clear about this? अरे लिखा ना? देखो, Yes. taking its magnitude, what will happen? U will be G mm by R. Magnitude लिया. Minus can be neglected. Minus G mm by R you are getting. Clear? Now write down. Let V is the minimum velocity. V is the minimum velocity by which the body is projected. V is the minimum velocity by which the body is projected, which is also known as escape velocity, which is also known as escape velocity. सर फिर से Let V is the फिर से थोड़ा minimum velocity by which the body is projected, which is also known as escape velocity, which is also known as escape velocity, then its kinetic energy is given by kinetic energy K is equal, kinetic energy is given by half mv square. Kinetic energy K is equal half mv square. Understand this? Half mv square. Its kinetic energy is equal half mv square. Half mv square. अरे दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हेलो, half mv square. Now यस सर write down, according to conservation of energy, according to the law of conservation of energy, U is equal K, the total gravitational potential energy, is equal to kinetic energy. U is equal what? G mm by R is equal half mv square. Mass getting cancels out. So escape velocity is your 2 gm by R, or escape velocity is your root over of 2 gm by R. Very important. You see, escape velocity is your root over of 2 gm by R. Very important. Means escape velocity only depends on mass of the planet and radius of the planet. Never depends on the body by which you are projecting. Clear? Escape velocity of a planet only depends on mass of the planet and radius of the planet. Never depends on the mass of the body by which you are projecting. Clear? तो फॉर अर्थ के लिए कितना होगा देखो, या अर्थ के लिए कितना होगा? फॉर अर्थ मास कितना है बोलो? अर्थ का मास कितना है? हेलो, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? टेल मी. अरे व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? सर 6 into 10 to power 24 kg 24 kg. Very good. And radius of Earth 6.4 into 10 to the सर power 6 6.4 into meter. 10 to power Yes, 6 मीटर 6 meter. किसका कुछ डाउट है? Yes, is used for launching rocket. Yes, सही है प्रतीक. आगे देखेंगे कैसे रॉकेट को लॉन्च करोगे. वाह, yes, yes. And G तो पता है, ये तो बहुत फेमस है. 6.6 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. स्क्वायर बाय Sir. केजी And अभी स्क्वायर डालो escape velocity Sir. of Earth square root of 2 g is 6.6 into 10 to the power minus 11. Mass is what? 6.0 into 10 to the power 24 by radius is 6.4 into 10 to the power 6. अगर इसको कैलकुलेट करोगे नियरली 11.2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड आएगा और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. Escape velocity of Earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अरे समझ में आया? तो किसी भी चीज को एस्केप करने के लिए कितना वेलोसिटी की जरूरत है?
11.2 किलोमीटर पर सेकंड की जरूरत है। मतलब ये पेन मैंने पकड़ा तो पेन को अगर फेंकूंगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में, तो ये वापस नहीं आएगा। समझ में आया? कभी वापस नहीं आएगा। अरे 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर फेंको, वाह। अंडरस्टैंड दिस? The escape velocity of Earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सच ए ह्यूज वन। तो जिसका जितना ज्यादा escape velocity है उतना safe है planet, because you can what they create atmosphere, you can create that atmosphere there. Large is the escape velocity, what easy to create the atmosphere. Understand this? We are interested about Mars. Why we are interested about Mars? Because escape velocity of Mars is more than escape velocity of Earth. मार्स का मास ज्यादा है, रेडियस भी ज्यादा है। अगर कैलकुलेट करोगे मार्स का तो यार 11.8 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, जो अर्थ से भी ज्यादा है। मींस वी कैन प्रिपेयर, वी कैन मेक दैट एटमॉस्फेयर इन व्हाट मार्स इजीली, वी कैन व्हाट मेक ऑन एटमॉस्फेयर देयर बिकॉज इट्स एस्केप वेलोसिटी इज व्हाट वेरी हाई। क्लियर? यहीं पे क्वेश्चन गिरता है हमेशा, रीजनिंग क्वेश्चन, what earth has well defined atmosphere but moon does not have, why? अरे अर्थ हैज वेल डिफाइंड एटमॉस्फेयर बट मून डज नॉट हैव, क्यों? कभी सोचा है? अरे अर्थ के चारों तरफ अगर ये गैसेस है, ये बाहर क्यों फैल नहीं जाते? ऐसे ऐसे क्यों बाहर नहीं चले जाते? सिर्फ अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं ये एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के चारों तरफ ही बाइंड होके रहते हैं। व्हाई नॉट इट जस्ट व्हाट just expands like this? Why not? Because we know that gas always expands. But in case of earth, why it doesn't expand here? Why? Because the lightest gas, speed of a lightest gas molecule is what? Highest, that is hydrogen. इसका लगभग कितना आ रहा है? 5.2 का आ रहा है, 5.2 का आ रहा है किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे हाईएस्ट है हाइड्रोजन का है, वाह। अरे अर्थ से एस्केप होने के लिए उसको कितने की जरूरत है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की जरूरत है। ये चाहे भी एस्केप नहीं कर पाएगा ये गैस मॉलिक्यूल। इसलिए जितना भी गैस फॉर्म हो रहा है यहीं पे सभी अर्थ के अंदर ही रहते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हैं, बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज सो हाई। इसलिए मार्स में भी अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते तो इजिली क्रिएट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मार्स इज वेरी हाई, बट मून डज नॉट हैव वेल डिफाइंड एटमॉस्फेयर। व्हाई? मून का अगर एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम है, लगभग ये 5.1 किलोमीटर पर सेकंड का आ रहा है, वेरी लेस। तो गैस मॉलिक्यूल का 5.2 है, मोर देन 5.1। देयरफॉर मून में जितना भी तुम गैस दे दो वो हमेशा एस्केप होके चले जाएंगे बाहर। तो मून डज नॉट हैव वेल डिफाइंड एटमॉस्फेयर। अंडरस्टैंड दिस? तो लिखो यहीं पे एक क्वेश्चन लिखो, लिखो नोट करके लिखो, राइट डाउन इन नोट। Earth has well-defined atmosphere. Earth has well-defined atmosphere because its escape velocity is more than the escape velocity of gas molecules. Earth has well-defined atmosphere because the escape velocity of Earth is more than the escape velocity of gas molecule. Whereas moon does not have any well-defined atmosphere. Moon does सर not फिर have, से थोड़ा लिखो, whereas moon does not have well-defined atmosphere because the escape velocity of moon is less than the escape velocity of gas molecules. The escape velocity of moon is less than the escape velocity of gas molecule. Understand this? अरे सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, अरे समझ में आया इसके वेलोसिटी या कुछ क्वेश्चन पूछना है? बोलो। आफ्टर दिस एनी क्वेश्चन? No, sir. नो, आगे बढ़ेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे। लिखो
फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट the escape velocity of a planet, find out the escape velocity of a planet whose mass is 4 times the mass of Earth and radius is 2 times the radius of Earth, and radius is 2 times the radius of Earth. निकालो कितना आएगा मीटर पर सेकेंड। और किसका कुछ आया? ये सर 22.4 सभी का आया। सर रोहन तुम्हारा भी आ गया। 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यस यस 22.4. क्या बोलो? सर 22.4 किलोमीटर पर यस सेकेंड। देखो कैसे क्या 22.4 इजी है। किलोमीटर पर। अरे मास ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स दैट मास ऑफ अर्थ, ये बताया था कैसे कैलकुलेट करोगे। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यस यस आशीष सभी का एक आंसर आया, मतलब करेक्ट है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज व्हाट 2 g मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर रूट। तो 2 g मास ऑफ प्लैनेट इज 4 इंटू me बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 re रूट आवर। तो 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, मतलब ये आ गया √2 रूट क्या है 2 जी एम ई बाय आर ई। अरे गलत कर दिया शायद सर, नहीं सही है। तो √2 इंटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम ई बाय आर ई इज व्हाट 11.2 है। √2 1.4 है, गलत कर दिया शायद सर, या सही है? अरे एक √2 आ रहा है ना, सब गड़बड़ी कर दिया। नहीं यहाँ पे 2 2 4 है, √2 आएगा ना 2। रेडियस ऑफ सर द जो था प्लैनेट इज वो 2 तो सर टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दिया सर। सब कैलकुलेशन गड़बड़ी कर यस दिया। सर। सर कितना आएगा? नो सर 28 8 carry 2 14 1 is 14 6 16 1 15. How much you're getting? 15.68 सर उतना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड है। सर प्रतीक क्या कुछ बोलो बोलो? बोल रहा है। अरे बोलो ठीक है सर। सर इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर मैं अभी थोड़ा निकाला ना इसके वेलोसिटी का 2gm/r। अरे 2gmp/rp, mp के लिए लिखो 4me, rp के लिए लिखो 2re, एक कैंसिल हो गया। √2 इंटू 2gme/re। अरे मेरा √2 gme/re क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ना। अरे समझ में है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये √2 है। इसको कभी डिस्टर्ब मत करो, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसी को कभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। ऑलवेज ट्राई टू व्हाट कीप द वैल्यू लाइक दैट। तो कितना है √2 इंटू 2gme/re, √2 gme/re इज व्हाट 11.2 व्हाट किलोमीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर नॉट? 11.2 इंटू √2, तो 11 पॉइंट इंटू 1.4 राइट ऑन 15.68। समझ में है सभी का? अरे सभी का गलत हो गया, ऐसे कैसे हुआ?